equation of two algebraic sentences, equality of an algebraic sentence to 0, for example, 2x plus 3 equals 5x plus 9, 2x plus 6 equals 0, 5y square plus 3y minus 9 equals 0. Now, four symbols of equations are there. ये कौन कौन से इसमें symbols कह लीजिए या इसके जो participants होते हैं ये कह लीजिए कौन कौन से. Number one, there is a variable involved. Number two, there is constant involved in an equation. Number three, that is known as a coefficient, and number four, that is known as a par. अगर इस पार को डिफाइन करें तो मैं अभी जो ऊपर लास्ट में पार्ट बी पे पढ़ रहा था 5y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 9 इक्वल 0. देख लीजिए सबसे पहले इसमें जो वेरिएबल है वो मेरे पास y है. अगर आप इसमें कांस्टेंट को डिफाइन करें तो कांस्टेंट मेरे पास 9 है. अगर आप इसके कोएफिशिएंट को डिफाइन करें तो मेरे पास 5 भी कोएफिशिएंट है और मेरे पास 3 भी कोएफिशिएंट है. और जो पार मेरे पास अवेलेबल है इस पार को आप y स्क्वायर मींस 2 पार कहते हैं और इस 2 पार में मेरे पास जो है अभी तक ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिसको मैंने अभी लिख लिया. सो क्लास वेरिएबल क्या है इसकी डिस्कशन हम लास्ट टाइम कर चुके. एनीथिंग के जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है ये कांस्टेंट नहीं होता, ये फिक्स्ड नहीं होता. एवरीथिंग इज नोन एज अ वेरिएबल. और नॉर्मली हमने डिफाइन किया था कि इन वेरिएबल्स को लेटर्स के साथ हम एक्सप्रेस करते हैं. व्हाट इज अ कांस्टेंट? कांस्टेंट इज अ रियल नंबर दैट दे हैव अ स्पेसिफिक वैल्यू. फॉर एग्जांपल 5x square plus 3x minus 9 equals 0. In this equation 5, 3 and 9 are the constants. मगर एक बात यहाँ पे याद रखिएगा क्लास, मैं इनको कांस्टेंट कहता हूं मगर इसको कंप्लीटली कांस्टेंट नहीं कहता. If these constants are attached with the variable, then I can define these constants as coefficient. If ये आपके जो constants हैं आइसोलेशन में हैं तो मैं फिर इसको कंप्लीटली कॉन्फिडेंस के साथ कांस्टेंट्स कह सकता हूं. एनीहाउ आपको इन चीजों का पता है. कोएफिशिएंट इज द नंबर विद द वेरिएबल. इट इज ऑलवेज at the left hand side of a variable. For example, 5x square plus 3x minus 9 is equal to 0. So 5, 3 are the coefficients of x square and x respectively. What are the pars? ये pars आपके सामने हैं जिसको आप देखते हैं. ये अपर पोजीशन पे होती हैं और डेफिनेटली ये जो पार्स होती हैं ये वेरिएबल को मल्टीप्लाइड फॉर्म में देखती हैं. आइए इन पार्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. पेज नंबर 21 is there. So according to this information, if I write a variable in terms of a par, I can write x की power 4 times x. If y is with power 7, it means y is multiplied 7 times. If z power 5, then z is multiplied 5 times. Now we discuss the types of equations. हम gradually move कर रहे हैं और gradually move करने से हम अपने analysis की तरफ जा रहे हैं. Types of equations, there are 3 types of equations according to the number of variables. देखिए इस इक्वेशन को मैं बड़ी इजीली कह सकता था कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल एंड सो ऑन. मगर फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैंने ऐसा किया कि हम इसको 0 लेवल से डिस्कस कर रहे हैं. सो इसीलिए मैंने इनकी जो इनके वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन करने की कोशिश की है. नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. Number 2, according to the power of variables. And number 3, simultaneous equations. Now we explain each of them separately. Number 1, according to the number of variables, we have 3 types of equations according to the number of variables. For example, 1 variable equation, 2 variable equation or 3 variable equation. 1 वेरिएबल इक्वेशन वो आपकी इक्वेशन होती है कि जिसमें
एक वेरिएबल जो होगा वो एग्जिस्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल 3x plus 4 is equal to 0, 5x plus minus 9 equals 13। देख लीजिए, इसमें वेरिएबल जो मेरे पास है वो एक है जिसको आप x कहते हैं। Two variable equation, it means there may be a more than x and y. For example, 5x plus 3y equals 4, 2x plus 6y equals 9, 8x square plus 2y square minus 6y plus 4 equals 3x. So it contains x and y as variables. Number next is three variable equations. इसका मतलब ये है x, y और z भी इसमें शामिल है. It is known as the three variable equation. For example, 3 minus z equals 0. 6x cube plus 5y square minus 8z4 equals 0. So all of these actually explain more than one variable. There is variety of variables, for example, x, y, and z. Number two, second type जो आप पढ़ रहे हैं, this is according to the power of variables. It can be linear equation, it can be quadratic equation, or it can be a cubic equation. जैसे इसके नाम आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, linear equation, it means if the variable of the equation contains power 1, it is known as a linear equation. वालेकुम अस्सलाम. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस सर, वो अलाउ कर दें, बाकी स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि मैं अभी तक अलाउ नहीं किया था. मैं कर चुका हूँ. डोंट नो कुछ लेट है तो मैं दोबारा देख लेता हूँ. थैंक यू सर. ऑलराइट क्लास, यहाँ तक हमने कुछ जो वेरिएबल्स को डिफाइन किया, इनकी टाइप्स को डिफाइन किया और इनकी पार्ट्स तक आ चुकी है. और पार्ट्स को देखने के बाद अब हम जो है इनको डिफाइन करते हैं. लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके बाद मेरे पास है जिसको आप क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं. सो पेज 22 पे आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं. 2x plus 3 equals 0, ax plus b equals 0, 5x plus 9 equals 0, x has a power 1. तमाम इक्वेशंस में देख लीजिए, हमारे पास जो x की पावर है वो 1 है. 1 पावर का मतलब ये है कि इट इज अ लीनियर इक्वेशन. नंबर 2, quadratic equation. An equation is quadratic if the maximum power of the variable is 2. For example, ax square plus bx plus c equals 0, 2y square plus 3y plus 7 equals 0, 6z square minus 9z plus 4 equals 0. The maximum power of x is 2. Class, if I ask about the implicit equation or explicit equation or one variable equation or three variable equation, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इन चीजों का पता है. जैसे आप इक्वेशंस को, मींस लास्ट टाइम आप फंक्शंस को डिफाइन कर रहे थे, तो इनकी जो एग्जिस्टेंस थी इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट कौन सी है और एक्सप्लिसिट कौन सी है. एनी अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेटेड रखा करें. किसी भी वक्त जो है ना वो आपको इसकी डेफिनेटली जरूरत पड़ सकती है. नंबर 3, साइमल्टेनियस इक्वेशंस. आई एम सॉरी, द क्यूबिक इक्वेशन इज देयर. एन इक्वेशन इज क्यूबिक if the maximum power of variable is 3. For example, ax cube plus bx square plus cx plus d equals 0. अगर मैं आपको इस इक्वेशन के बारे में बताऊं तो ax क्यूब प्लस bx क्यूब, सबसे पहले तो देखा कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं. इस क्यूबिक इक्वेशन को मैं इस टाइम सिंगल वेरिएबल इक्वेशन भी कह सकता हूं. रीजन यह है कि x is only the variable here, d is constant here. और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस इक्वेशन के रिलेशनशिप में क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि all of these components they contain the positive relationship. anyhow हम इसको डिफाइन कर रहे थे क्यूबिक इक्वेशन में, चूंकि इनके मैक्सिमम पावर जो थी
वो 3 है, सो ये क्यूबिक इक्वेशन है. एंड सो ऑन द पॉलिनोमियल और द 4 टाइम इक्वेशन इज एक्चुअली 6x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 is equal to 0. And here, number 3 is a simultaneous equation. The equations having a common solution are the simultaneous equations. आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है और नेक्स्ट टाइम हम इन्हीं पे ऑपरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको बड़ा ओपनली जो है ना इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा. साइमल्टेनियस equations having common solutions are known as the simultaneous equations. For example, 2x plus 3y equals 6. 6x plus 6y equals 2. अब देखिए जरा इसको अगर मैं डिफाइन करूं, there are more than one equations. If there are more than one equations at a time, these are known as the simultaneous equations. These simultaneous equation means x and y or the number of variables in both of the equations are same. अब इसकी सॉल्यूशन की तरफ अभी जाएंगे, मगर इससे पहले जरा इसको एनालाइज कीजिए. 2x plus 3y, देखिए इस इक्वेशन को मैं अगर डिफाइन करूं, 2 is a coefficient of x, 3 is also a coefficient of y, 6 is actually a constant that is along the right hand side of the equation sign. There is positive relationship between these variables, and y and x are the two variables, whereas this equation is a linear equation because the maximum power of each of the variable is 1 only, not 2, not 3, not anyone else. So these are actually the simultaneous equations. These are linear equations. और इसके अलावा आप इनकी जो है ना कुछ डेफिनेशंस कर सकते हैं अपनी पास्ट इंफॉर्मेशन से. सिंगल वैल्यू, डबल वैल्यू, टू वेरिएबल एंड सो ऑन. 5y minus 6 equals 0. 2y plus 3 equals 1. So these are the examples of simultaneous equations. Now, we move for the solution of the equations, mean the simultaneous equations. It is very much interesting and it is very much easy. इस solution को हम लास्ट टाइम अपने स्कूल एजुकेशन से भी कर सके और वहां पे भी हमने इसके कुछ सॉल्यूशंस जो थे वो डिस्कस किए थे, और स्कूल्स के बाद आज हम इसको किसी और फॉर्म में भी देखते हैं, क्योंकि इनके एग्जांपल्स नेक्स्ट आगे कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ जाएंगी, तो आपको इसे फॉर्म में लाने के बाद इसके सॉल्यूशन को ड्राइव करना पड़ेगा. इट इज अ प्रोसेस इन विच वी कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स. लेट अस सॉल्व द इक्वेशंस रेफर्ड अबव. Solution of linear equations. If the equations are simultaneous but linear, later on आपकी quadratic भी हो सकती है. For example, 2x plus 3 is equal to 4x. Now let me check. Solution इसका कैसे करेंगे आप? 2x plus 3 equals 4x. सबसे पहले देखिए कि आपका जो वेरिएबल है this is x, और इस इक्वेशन में जो वेरिएबल मौजूद है इसको आपने आइडेंटिफाई किया. इट इज अ सिंगल वेरिएबल इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन. नाउ वी हैव टू सॉल्व. सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे? सबट्रैक्ट 4x फ्रॉम बोथ साइड्स. तो इस 4x को बोथ साइड से जैसे सबट्रैक्ट करेंगे, आपके राइट हैंड साइड वाली जो तमाम वैल्यूज हैं वो वैनिश हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी. 4x minus 4x, that will be cancel out. We are with actually minus 2x plus 3 equals 0. अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लीजिए और इनकी वैल्यूज को जस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, तो तब भी वैल्यू सेम आएंगे. यानी और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं और इसके बाद फिर जाके दूसरा सोल्यूशन आपको बताता हूं. अगर आप इसकी माइनस 4x को माइनस या सब्ट्रैक्ट नहीं करते, देन इसका क्या एक और तरीका है वो मैं भी आपसे शेयर करूंगा. Subtracting 3 from both sides. तो अब क्या करें कि दोनों साइड से आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आवर वैल्यू इज इक्वल टू x इक्वल्स 3/2. ये तो एक डायरेक्ट सोल्यूशन था जो कि आपने अभी देखा, और इस डायरेक्ट सोल्यूशन से आपने देखा कि हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. Now let's see 2x plus 3 once again, please. Example number 1. 2x plus 3 is equal to 4x. जस्ट आप इन x को कंबाइन कर दीजिए. जैसे आप इस 4x को दूसरी तरफ लाते हैं,
या 2x को दूसरी तरफ लाते हैं तो मेरे पास 3 इज इक्वल टू 2x बाकी बच जाता है। जब आप इसको 3 इज इक्वल टू 2x कहते हैं, x के साथ 2 जो था वो मल्टीप्लीकेटिव फॉर्म में था। जैसे इस x के साथ मैं इस 3 को आइसोलेट करता हूं तो दूसरी जानिब जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो आई एम with x equals 3 over 2 once again. Now for check, put this x is equal to 3 over 2 in the original equation, that is 2 times 3 over 2, जिसका मतलब ये है कि इस x की जगह आपने 3 over 2 plus 3 जो था as it is equal to 4 times 3 over 2. Now we are with 6 equals 6. Left hand side is equal to the right hand side. That is a proper solution for our linear equation. So इस equation का एक check जो था वो आपने देखा कि जैसे वैल्यू को आप प्लग करेंगे तो इससे आपकी वैल्यूज की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आइडेंटिकल आ जाती है। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? एनी वन ऑफ यू? आर यू प्रेजेंट? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। Yes, sir. समझ आ गई। All right. Atif Munir, 47. Are you with us? Atif Munir, 47, E19 BPA. Are you listening to me? I think he's not present in the class. Just linked with our class only. Lara 54, are you there? Hello, Lara, are you there? Hello, Assalamu alaikum, 54. sir. Yes. Any question? Walaikum assalam. No, sir. Are you listening to me? Yes, sir. Great, great, great. Raza 62, are you there? Yes, sir. All right, great. Let me move towards another discussion. Page number 23. X की जो solution आपने फाउंड किया, 3 over 2 is correct value. Let us see another example. ये जो other example है इसमें 2y plus 3 is equal to 6 minus 7 and check it. पर जैसे आप इसको चेक करते हैं मैं आपको असाइन करता हूं कि इस एग्जांपल को आप खुद ट्राई कीजिएगा। ये सोल्यूशन गिवन है आपको, जस्ट जो है ना वो अपनी आप नोटबुक्स के आप खुद इसको सॉल्व कीजिएगा। आप इससे लर्न करेंगे। जस्ट इसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ट्रांसफॉर्मेशन के बाद y की वैल्यू निकालनी है जो कि 5 over 2 है। मगर मैं आपसे कहूंगा कि इन स्टेप्स को खुद सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3। Now, example number 3 is a little bit different from the example number 2 and example number 1. 5x plus 3 over 2 is equal to 2x plus 4 over 3. Now, this is a different situation. Along left hand side and right hand side, we are with the numerator and denominator. Numerator and denominator, it contains 5x plus 3 over 2 as well as 2x plus 4 over 3 respectively. So इनको solve करना थोड़ा सा हमारे लिए different होगा as compared with example number 2 and example number 1. Now we have to cross multiply these values. तो आप इनकी cross multiplication कीजिए। डिनोमिनेटर में 3 जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड के 5x plus 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x plus 4 से मल्टीप्लाई होगा। We are end up with 15x plus 9 is equal to 4x plus 8. यहाँ पे आपकी एरर के चांसेस है। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर एग्जांपल नंबर 2 में जो 6x plus y तो नहीं था, सॉल्यूशन वाले सेकंड स्टेप में 6y minus 7 लिखा हुआ है। कौन से सॉल्यूशन में? एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2 का सॉल्यूशन में जो लिखा हुआ है 2 plus 3 is equal to 6y minus 7, ऊपर y तो नहीं था 6 के साथ, 6 के साथ वो मिसप्रिंट हो गया होगा। अब मेरी सुनिए,
अगर ठीक है ये मौजूद नहीं है जी आप जी इसको फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। माइट यस बी सर आंसर वहाँ जो पे है ना माइनस डिफरेंट टू आ आ जाए। रहा था मैंने जी यस जी सर मैंने जी सोल्व किया ठीक है, कोई माइनस ऐसी टू आ बात रहा नहीं। ये मैं आपको ना सिर्फ अभी इसका था थैंक यू इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जैसे आपने बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा ना, ये प्लस और माइनस हमें वहां पे जाके बहुत फायदा देंगे। हमें प्लस और माइनस बताएगा कि आर यू इन लॉस और आर यू इन प्रॉफिट। तो इन चीजों को हम देख सकेंगे कि डायरेक्शन हमें क्या बता रही है। सो करेक्ट कर लीजिए, 2y+3 इज इक्वल टू 6y-7। ऐसा करके देखिए आपके आंसर्स क्या है। नो लेट्स सी क्लास, ये जो 5x+3/2 को डिफाइन हमने किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 15+9-4x-8 इज इक्वल टू 0 को हमने आइडेंटिफाई किया। नाउ 15x-4x वी आर एंड अप विद 11x plus 9 minus 8 is equal to plus 1 is equal to 0. Now we are with x is equal to minus 1 over 11. Now please plug these values in the original equations. As in numerator as well as in denominator, we can solve as it is, as in original form. Uh, 5 times minus 1 over 11 plus 3 over 2 is equal to 2 times minus 1 over 11 plus 4 ओवर 3। अब इनकी वैल्यूज की न्यूमरेटर पे एज इट इज सॉल्व कर लीजिए, डिनोमिनेटर को अभी रहने दीजिए। और जैसे आप ये कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है, अगर आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर में 11 है वो मल्टीप्लाई होकर डाउनवर्ड आ जाता है। मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लाजमी तौर पर स्टेप बाय स्टेप किया करें, अदरवाइज चांस ऑफ एरर्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। So once again, along page number 24, we are with 828 over 22 is equal to 42 over 33. That means 14 over 11 is equal to 14 over 11. Our left hand side is equal to our right hand side. Now, exercise number 1. It is given for your home task. Please consider these questions. कोई इसमें चेंज नहीं है, हम जितनी एग्जांपल्स को देख के आए हैं वही तमाम एग्जांपल्स है। मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं और उसके बाद फिर हम इसकी डिस्कशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। मेरी गुजारिश है कि अगर आपका लिंक अभी एंड हो जाता है तो इसको रीज्वाइन कर लीजिएगा ताकि अपनी डिस्कशन को हम कंटिन्यू कर सकें। सॉल्व द फॉलोइंग एंड चेक 2x+3 इज इक्वल टू 4x+1। क्या करेंगे, इसको आप रीअरेंज करेंगे और उसके बाद x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। 2 इज सेम 7 अभी आप करके आए जो आपके राइट हैंड साइड पे है, और डाउनवर्ड देखिए तो ये जो 3 है मेरे पास 1/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 9x। तो सबसे पहले एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और यूं फिर आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट 5/4 टाइम्स 9x इज इक्वल टू 14x-1। अब इसको सॉल्व कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट कीजिए, 45x/4 आ जाएगा इज इक्वल टू 14x-1 आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट 6y+2 बड़ा इजी है इसमें तो, और उसके बाद है जी 4 टाइम्स x+5 -3 टाइम 3 टाइम्स x-2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x+3+4। अब सबसे पहले इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए। अब देखिए कि x वाली मींस वेरिएबल्स वाली जो कंपोनेंट्स इनको अलग कीजिए, कांस्टेंट्स को अलग कीजिए और इनको सॉल्व कर लीजिए। सेम इज केस विद 5 एंड 6, और उसके बाद लास्ट में 10 जो था वो बिल्कुल आपके 7 के अकॉर्डिंग है। आपको आंसर्स गिवन है, आपकी जो है ना आसानी के लिए मैं आंसर्स प्रोवाइड किए और ये बुक जो थी मैंने रिकमेंड की। तो अब हम जो है डिफाइन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरा रिफ्रेश करते हैं कि वो क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली एन इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर जो थी वो 1 नहीं थी बल्कि वो 2 थी। ये 3 भी नहीं हो सकती, अगर आप इसको क्वाड्रेटिक कहें इसकी पावर 3 हो जाए ये भी गलत है। सो 2 जो इसकी पावर थी मैक्सिमम, आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। नंबर 1 इसके सॉल्यूशन के जो मेथड्स थे, फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड नंबर 3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
all of these three solutions, we are familiar with them. Now, number one, by factorizing. तो सबसे पहले इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म मैं आपसे शेयर कर दूं. अब चूंकि हम इस पोजीशन में हैं कि हम फैक्टराइजेशन को और इसके अलावा दीगर इसके जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं इनको अप्लाई कर सके, मगर इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है. सो क्लास, मेरी आपसे गुजारिश है, ये जो अभी मैंने जूम के साथ इक्वेशन आपसे शेयर की हुई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अगर कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और आपने सॉल्यूशन निकालना हो तो आप काइंडली इनको फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा करें. ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, whereas a and b are the coefficient of x² and x respectively, and x is only the variable, c is our constant. और इसके साथ जो साइंस अटैच है इनको भी काइंडली देखा करें. आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा पॉसिबल है कि आपको ये सी राइट हैंड साइड पे माइनस सी नजर आए, आपको ये जो बी है किसी और फॉर्म में नजर आए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टैंडर्डाइज दिस quadratic equation in the form of ax² plus bx plus c is equal to 0. Now it is a quadratic equation. To solve it, number one, we get the product of a and c, which is ac. ये जो आपको बताने जा रहा हूं ये फैक्टराइजेशन है. आप सबसे पहले इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखेंगे. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आप इनकी बिल्कुल एक्सट्रीम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन c को और a को. Our answer is actually ac. Then we make the factors of ac in such a way that their product is equal to ac and their sum is equal to central value, that means b. अब इनको फैक्टराइज करके हम प्रैक्टिकली देखते हैं. लेट मी कंसीडर एन एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 1, we solve the quadratic equation 2x² plus 3x plus 1 is equal to 0. Please compare this equation with the standard equation. It is equal to ax² plus bx plus c is equal to 0. We have a equals 2, b equals 3, c equals 1. All of these are positive, none of them is negative. X² means the equation is quadratic. Now, in our equation, as we are with a is equal to 2, b 3, c 1. Now, what is our cross or multiplied form of ac? आप इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, that is 2. Now, आपके पास दो ऐसे जो है ना वो नंबर्स आने चाहिए जिसको आप come again on page number 24. It is example number 1. 2x² plus 3x plus 1 is equal to 0. 2 is actually the multiplicative form of AC. Now 2 multiply करें तो हमारे पास 2 आ जाए, और अगर आप इनको ऐड करें तो हमारे पास ये कंपोनेंट दरमियान में 3 है तो ये 3 आ जाए. तो एक्चुअली हमारे पास जो है वो 2 और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो 1 आ गया. प्लीज एडमिट ऑल. Now 2x plus 2x, ये मेरे पास एग्जांपल नंबर 1 के बिल्कुल बॉटम में है. 2x² plus 2x plus x plus 1. Now we can take common, that is 2x. अगर आप इस 2x को कॉमन लेते हैं तो मेरे पास इन बिटवीन x plus 1 और इसके साथ साथ प्लस 1 कॉमन लेने से x plus 1 आ जाता है. रिमेंबर, आप जब भी फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ये जरूरी है कि आपकी इन स्मॉल ब्रेसेस में जो वैल्यूज हैं ये सेम होनी चाहिए. अगर आपकी ये स्मॉल ब्रेसेस में वैल्यू सेम नहीं है, आपके फैक्टर्स जो है ना वो डेफिनेटली ये करेक्ट नहीं है. सो आई कैन टेक कॉमन एज x plus 1 means 1 time. I am going to combine across my small braces 2x plus 1. So I'm with actually 2x plus 1 times x plus 1. Now 2x plus 1 times x plus 1 is equal to 0. That means 2x plus 1 is equal to 0 and x plus 1 is equal to 0.
I can solve it further. 2x plus 1 is equal to 0 means 2x is equal to minus 1, and finally I get x is equal to minus 1 over 2. On the other side, x plus 1 is equal to 0, whereas x is equal to minus 1. So class, I am with the two values of x, minus 1 over 2 as well as minus 1. Please plug these values in our original function. As you plug x is equal to minus 1 over 2 and x is equal to minus 1 in the original equation, लेकिन आप इनको अलग अलग जो है ना इनको प्लग कीजिएगा. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने माइनस 1 over 2 को प्लग किया तो आई कैन राइट 2 times minus 1 over 2 square as well as 3 times minus 1 over 2 plus 1, that is equal to the value minus 1 over 2 minus 3 over 2 plus 1 is equal to 0, whereas 3 minus 3. All right. Now example number 2, 3y square plus 8y is equal to 4y minus 1. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक कीजिए कि हमारे पास जो वैल्यू है मैक्सिमम पार जो है दैट इज 2. अगर ये 2 मैक्सिमम पार है it is a quadratic equation. Then again check the value of variable is actually y, and so not actually the value of variable. The variable is only the y, not x or z. So it is a single variable function. Another, we can combine the values along right hand side as well as the values along left hand side. 3y square plus 8y is equal to 4y minus 1. आप इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज ax square plus bx plus c is equal to 0. So 3y square 8y और 4y को कंबाइन कीजिए. तो जैसे आप इसको कंबाइन करते हैं, आई एम विद द 4y ओनली, दैट इज पॉजिटिव. क्योंकि जैसे आप इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट पे लेके आते हैं, आपकी वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं. अल्टीमेटली आई एम विद actually this zoom equation, that is 3y square plus 4y plus 1 is equal to 0. Once again 3 को मल्टीप्लाई कीजिए एक्सट्रीम से, mean 3 times 1 is equal to 3. So हमारे पास जो फैक्टर्स आनी चाहिए वो ऐसे हैं कि जिनको आप अगर प्लस करें तो वो 4 आ जाए और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो वो 3 आ जाए. So clearly I am with 3y square plus 3y plus y plus 1 is equal to 0. I can take common 3y from this value. Y plus 1 is in between. Plus 1 common, then I am with y plus 1. Clearly, I can combine these values. 3y plus 1 times y plus 1 is equal to 0. So once again 3y plus 1 is equal to 0. And y plus 1 is equal to 0. When I solve the 3y plus 1 is equal to 0, I'm with y is equal to minus 1 over 3. And when I solve y plus 1 is equal to 0, I'm with y is equal to minus 1. So I have two values, minus 1 over 3 as well as minus 1. So plug these values in our original function. अगर आप इसको प्लग करते हैं तो 3 times minus 1 over 3 square plus 8 times minus 1 over 3 is equal to 4 times minus 1 over 3 minus 1. जब आप इसको प्लग करते हैं y is equal to minus 1, and please verify the results whether left hand side is equal to right hand side. Any question up to this? Any question up to this? No, sir. All right. It is very much easy task. It is not so much complicated. Now 26 is exercise number 2.
एक्सरसाइज नंबर 2 इज आल्सो फॉर यू, चूंकि ये इजी टास्क है, हम इसको जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं. कमिंग जो आपकी एक्सरसाइज होंगी उनको इंशाल्लाह जो नई कुछ इसमें टेक्निक्स होगी वो मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा. सो प्लीज इन्हीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को वंस अगेन सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कीजिए. ये ऑलमोस्ट 10 है, उनके साथ साथ आपके पास जो गिवन है इनके आंसर्स भी गिवन है. तो काइंडली इनको देखिए और इसको सॉल्व कीजिए. नेक्स्ट हम इनको कंप्लीटिंग स्केयर से डिस्कस करना चाहेंगे और अभी मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इंशाल्लाह उसको हम जैसे ही वेरीफाई करते हैं मींस लास्ट इंफॉर्मेशन को पहले जो आपका लेक्चर हो चुका और आज का लेक्चर जो हो चुका इसको कंबाइन कीजिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और अपना एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए काइंडली. अदरवाइज मैथमेटिक्स का जो प्रैक्टिस है वो आपको स्कैटर्ड पेजेस पे मुमकिन नहीं होगी. इफ यू फील अ क्वेश्चन यू कैन आस्क. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर ये एक्सरसाइज नंबर 2 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें? डेफिनेटली लगा सकते हैं. मैंने भी चूंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी डिस्कस नहीं किया, जस्ट करने जा रहा हूं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं. सर वैसे ये मिड टर्म सोल्यूशन से होगी, ये सिंपल इक्वेशंस हैं, है ना? नो इशू, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए. दीज आर एक्चुअली फॉर योर प्रैक्टिस. नेक्स्ट टाइम हम जब आएंगे तो हम अपने इनकी कुछ प्रोफेशनल वेरिएबल्स और इंफॉर्मेशन के साथ आएंगे और वहां पे देखेंगे कंप्लीटिंग स्केयर में हम कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू मींस प्राइस और कॉस्ट और प्रॉफिट और रेवेन्यू और एनीथिंग एल्स. नाउ कंप्लीटिंग स्केयर मेथड इज द सेकंड मेथड. कंप्लीटिंग स्केयर कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से आप जरा देख लीजिए कि इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं. Following steps are necessary when we are solving an equation by completing the square. Number 1, write the equation in the standard form, that is ax square plus bx plus c is equal to 0. Number 2, divide both sides of the equation by the coefficient of x square. Our maximum power is 2 और इसका कोएफिशिएंट जो मेरे पास है दैट इज a. आप इसको a से डिवाइड कर देंगे. नंबर 3, रिमूव द कांस्टेंट बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. I want to eliminate the constant that is given in the equation. Number 4, add the square of the half of the coefficient of x on both sides of the equation. अब देखिए जो हाफ क्या है, एक्स स्क्वायर को पहले आपने ट्रीट किया तो मेरे पास खाली अब एक्स जो था वो मौजूद था, इसके हाफ से आपने इसको ट्रीट किया. लेफ्ट हैंड साइड विल बी बिकम द परफेक्ट स्क्वायर. नंबर 5, आफ्टर सॉल्विंग द राइट हैंड साइड टेक बोथ साइड्स अंडर द रूट. एंड नंबर 6, we will have two values of x after this process. Let me see the numerical example ताकि आप इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको ओपनली अंडरस्टैंड कर लें. नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एनालाइज कीजिए कि इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से रिजेंबल कर सकते हैं. सो प्लस के बजाय मेरे पास अब ये माइनस है, इसका ख्याल रखना पड़ेगा. Now first step, that is standardize करने के बाद divide both sides of the equation with the coefficient of x square. So यहाँ पे मेरे पास जो coefficient इसका था वो 3 है, तो दोनों तरफ आप इसके 3 से definitely divide कर देंगे और इन constants को भी अलग कर लिया. So I am with 3x square over 3 that is x square minus 8x over 3 that is 8 over 3x और -4 दूसरी तरफ चला गया तो -4 over 3. Now adding 4 over 3 square on both sides. Basically I want to kindly अपने माइक प्लीज म्यूट कर लिया unless and until कि मैं आपको मैं खुद रिक्वेस्ट ना करूं. आप अपने माइक्स को प्लीज म्यूट कर लिया करें, अदरवाइज जो ना वो काफी डिस्टॉर्शन होती है.
क्लास प्लीज गिव मी मोमेंट। यहाँ पे आपका जो पेज था, मेरा ख्याल है कि आपकी यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। मैं ये पेज अभी आपको जो शेयर कर देता हूँ, पेज नंबर 27। इसकी फाइल जो मैंने अभी बनाई इसमें 26 तक आ सका। 27 पेज जो होगा मैं भी आपसे शेयर कर देता हूँ, और उसका सोल्यूशन वहीं से डेफिनेटली आप देख सकते हैं। जस्ट प्लीज गिव मी अ मोमेंट। x square minus 8 over 3x plus 4 over 3 square means 16 over 9 minus 4 over 3 plus 16 over 9. After calculation, I'm with actually x minus 4 over 3 square. आप इसको जैसे ही ये इसको सॉल्व करते हैं, that is very much easy. That is actually a square a minus bx is equal to minus 12 plus 16 over 9 by LCM. आप इसका LCM लेंगे और LCM से इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी। x minus 4 over 3 square is equal to 4 over 9. Now taking both sides under the root. जैसे आप रूट अप्लाई करते हैं तो रूट की वैल्यू आप जानते हैं कि वो 1/2 होती है। इस 1/2 मींस रूट अप्लाई करने से मेरे पास स्क्वायर जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। So x minus 4 over 3 is along our left hand side, or 4 over 9 means 2 over 3 but with plus minus. So we have x minus 4 over 3 is equal to 2 over 3, and x minus 4 over 3 is equal to minus 2 over 3. Don't forget to apply the signs plus as well as the negative signs after taking the square root. X is equal to 2 over 3 plus 4 over 3, as well as s is equal to 2 over 3 plus 4 over 3. We are with x is equal to 2 and x is equal to 2 over 3. Now once again, you are requested to plug all of these values in our original functions or equation. I can plug x is equal to 2 means 3 times 2 square minus 8 times 2 plus 4 is equal to 0. I mean 16 over 16 minus 16 is equal to 0. That means 0 is equal to 0. Left hand side is equal to right hand side. Similarly, 3 times 2 over 3 square minus 8 times 2 over 3 plus 4. After a specific solution, I end up with 48 minus 48 is equal to 0. That means 0 is equal to 0. Left hand side is equal to right hand side. I believe कि आपने कुछ जो अभी तक लर्न किया है, आप इससे वंस अगेन फेमिलियर हो गए। इससे पहले आपने इसको सॉल्व किया होगा, मगर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको सीक्वेंस के साथ लर्न कीजिए।